Today we will start your new unit. Unit name is Database Management System. This is your new unit, Database Management System. In that, I think 4 sessions are given. 5 sessions are given. Total 5 sessions we will cover in this unit. And the weightage of this unit is maximum. If you see the syllabus and the weightage of your syllabus, look this. Look, unit number 3, database management system. Marks in theory exam कितना है 12. So means digital documentation we have covered from this unit. In exam only 8 marks question will come. Electronic spreadsheet only 10 marks question will come from this second unit. But the third unit, that is database management system, its weightage is 12 marks. Means maximum number of questions will come from this unit. So means this unit is most important for you. And the last unit after that, that is completely theoretical unit, web application and security. From this 10 marks question will come. So your part B is only for 40 marks and 10 marks question will come from the part A, that is called communication skill, green skill, self management skill, entrepreneurship skill. तो मीन्स उन स्किल में से क्वेश्चन आएंगे आपके. क्लियर? So unit number 3 name is database management system. In that first learning outcome is means session number 1 is appreciate the concept of database management system. Means in this session we will cover only basic concept. Basic concept means all the theoretical part, means what is data, what is information, what do you mean by database, how we create database management system, what are its advantages, what are its features, okay? Then how we create database, then the concept of field, record, table, then how we uniquely identify records from the table. So for that we have different types of keys like primary key, foreign key, alternate key, candidate key, composite key. So all these things we have to discuss in this session. Okay, session number 1 means learning outcome 1, appreciate the concept of database management system. For this I have one PPT file for you. Database management system. Now first slide of this is database. In that we two basic concept, one is data and second one is information. Now first line is given is the definition of database. Database is nothing but it is an organized collection of data. You can visualize it as a container of information. This we will see afterwards. First we will discuss data and information, because after that second topic is our database. So in the database section we will discuss this definition. Now data, what do you mean by data? Data are organized facts and figures, or you simply say that unprocessed information is known as data. Unprocessed information, or in another words you can say that data is a raw facts and figures. Raw means garbage, जिसका कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है? तो data is raw or unorganized facts that need to be processed, means जिसको process होने की जरूरत है. That means unprocessed information is known as data. जिसको भी process नहीं किया गया
that is known as data. Next, when data is processed, means after processing, when data is processed, organized, structured, or presented in a given context, so it makes it useful, is called information. So simple words, the definition of information is that after processing, whatever we get is called information. Means processed data is known as information, or unprocessed things is known as data. See this example, like your name, your age, height, weight, etc. are some data related to you. Means your height, your weight, your age, your name. These are the data that are related to you. A picture, image, file, PDF, etc. can also be considered as a data, because we don't know which type of picture it is, which type of file it is. So that means it considered as a data. For example, 165 centimeter, Lajpat Nagar, Ram Kumar, 16 years, class 10. These all are also a data, because इसका कोई मतलब नहीं है. Clear? Means unprocessed information है ये. ठीक है? So unprocessed, unorganized facts and figures are known as data. So data on its own has no meaning और context. Means data का कोई मतलब नहीं होता, अपने आप में कोई मतलब नहीं होता. That is called data. It is only after processing this data that it becomes information. Means after processing, whatever we get, that is known as information. Means meaningful things is known as information. For example, in the above context, Ram Kumar of 16-year age, having height of 165 centimeter, lives in Lajpat Nagar is information. Means Ram Kumar is a person who is 16 year and his height is 165 centimeter, or he lives in Lajpat Nagar. That means this is a complete information. Means after processing, we get meaningful data, that is known as information. I hope you have cleared this topic. Yes or no? Next topic is database. The database concept has evolved since the 1960s to ease increasing difficulty in designing, building, and maintaining complex information system. Means that when we are designing a complex information, that time we use the concept of database, or it start from 1960. It start from 1960. Clear? What is the definition of database? Now, the definition of database is an organized collection of data. Means if we put same or similar kind of information at one place, then we say that it is a database. So database is a group of files which contain related information, means similar kinds of information in an organized manner. So database is nothing but it is organized collection of data. You can visualize it as a container of information. Container of information means, suppose that we have a container, a big container, in that we put related information. So that means it is a database. Like database of a student means in that we can kept record of students only. So that is called database of student. So database nothing but it is a organized information, organized collection of data. Next, database management system. Database management system, it is a software package with computer programs
that controls the creation, maintenance, and use of database. Database management system, as the name suggests, that a system, a system which manage the database is known as database management system. एक ऐसा सिस्टम जो हमारे डेटाबेस को मैनेज करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा. तो दैट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज, बिकॉज थ्रू द सॉफ्टवेयर वी कैन मैनेज एवरीथिंग. तो सॉफ्टवेयर पैकेज कैन रन इन अ कंप्यूटर. तो लिखा database management system is a software package with computer programs that control the creation, means create the data, create a table, create a record, maintenance, and use of database. Maintenance means suppose we want to update any record at any moment of time, we can update it. So maintenance भी time पे होने चाहिए. Which record we want to delete, which we want to update or drop, कुछ भी command करनी है हमें, तो we can do. So we can do with the help of software. So database management system is the software package with computer programs that control the creation, maintenance, and use of a database. Then a database is an integrated means connected. Integrated means nothing but it is connected, मतलब एक से दूसरा जुड़ा हुआ होगा. ठीक है. Integrated collection of data records, files, and other objects. ठीक है. तो means records are connected with one table to another table. Then a DBMS allows different user application program to concurrently access the same database. Concurrently means at the same moment of time, means एक साथ एक बार में है हम सेम डेटाबेस से क्या करें, डेटा को फैच कर लें. तो मीन्स क्या, डेटाबेस DBMS अलाउ डिफरेंट यूजर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर हमारे वर्क कर रहे हैं और हमें डेटा चाहिए डेटाबेस में से, तो एक द सेम मोमेंट ऑफ टाइम वी कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम द सेम डेटाबेस. एक डेटाबेस से हम डेटा को फैच कर सकते हैं थ्रू द डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम. Now well-known DBMS includes, means these all are the name of DBMS softwares. Like Oracle is a database software, IBM DB2 is another database software, MySQL Server another database software. So these all are the names of database software. In that either we can use MySQL or we can use MS Access or we can use base software. Listen, MySQL is a free and open source software. MySQL जो है free है, open source software है. MS Access means Microsoft Access is a part of Microsoft और this is also part of database software. तो आप database के थ्रू भी कर सकते हो. और एक होता है base software. Base is a part of open office. यदि हम open office में काम करते हैं तो उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम बेस है. ठीक है. तो these are the name of the software. पेपर में क्वेश्चन आता है राइट एनी टू डेटाबेस सॉफ्टवेयर नेम, तो यू कैन राइट एनी टू फ्रॉम दिस. नेक्स्ट, डेटा कैटेगराइजेशन. डेटा कैटेगराइजेशन मींस कैटेगरी ऑफ डेटा. तो हियर वी हैव टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल्स. वन इज अ फ्लैट फाइल एंड सेकंड इज रिलेशनल फाइल. फ्लैट फाइल मींस where we store data in a single table. जहां पर एक ही टेबल में हम डेटा स्टोर करते हैं, that type of file is known as flat file, or it is usually suitable for less amount of data. Means if we have 5 records, 10 records, or maximum 100 records, that time flat file is suitable for us. Or if we have more amount of data, मीन्स ज्यादा डेटा अवेलेबल है आपके पास और स्टोर करना है, तो इट इज नॉट बेनिफिशियल. तो ये अच्छा नहीं है, इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो फ्लैट फाइल इज सुटेबल ओनली व्हेन यू हैव लेस अमाउंट ऑफ डेटा. देन रिलेशनल डाटाबेस, रिलेशनल मॉडल या रिलेशनल फाइल. हियर डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स एंड टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड. हियर relational
फाइल में हम it works with more data or large amount of data. Here we store data in table format or more than one table. एक टेबल में या एक से ज्यादा टेबल में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, किसमें, रिलेशनल मॉडल में, ठीक है. And the tables are linked using common field, means one table is connected with another table with same field, means दोनों में एक फील्ड ऐसा होना चाहिए जो कॉमन हो, जो दोनों को आइडेंटिफाई करे कि हाँ इसका रिकॉर्ड ये है, ठीक है. तो मीन्स this we can done with the help of foreign key concept और referential integrity concept. ये referential integrity concept आप पढ़ोगे, उसके थ्रू आप इसे कर पाओगे, ठीक है. Relational is suitable for medium to large amount of data. So means the difference between flat file and relational is flat file is used for less amount of data, whereas relational file is used to medium to large amount of data. Here we can store data in multiple tables or tables are connected with a common field using a common field. तो दो टेबल में एक फील्ड ऐसा होना चाहिए जो कॉमन होगा. नेक्स्ट, advantages of database software. Advantages. First advantage is data entry, update, read and delete cost is reduced. Data entry means if you want to create your record, means insert data into the table, or update means modification, read means to fetch data from the database, and delete means if you want to remove any record from the database, then that time its cost is reduced. Means simple one query you have to write in the software and you can do your work. Means one query is for inserting data, only another query is for update means modification, read to select data from the database, delete के लिए delete query. So means only you have to write one query, then it will reduce the cost. तो reduce cost कैसे हुई, खाली हमने क्या करना है, एक लाइन का कोड लिखना है, एक क्वेरी लिखनी है और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है. तो इससे क्या हुआ, पहला फायदा कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट इज रिड्यूस्ड. देन reduced data redundancy. Next is redundancy. Redundancy means duplicacy. Means यहाँ पर डाटा जो है डुप्लीकेट नहीं होता है. सपोज यू टेक एन एग्जांपल ऑफ मैनुअल फाइल सिस्टम. मैनुअल फाइल सिस्टम मीन्स without, suppose that we are working without any software and we are keeping all the records in a file, simple file folder जो होता है उसमें हम रिकॉर्ड रखते आ रहे हैं. मीन्स इफ स्टूडेंट टेक्स एंटर इन आवर स्कूल है तो फर्स्ट टाइम दे फिल देयर एडमिशन फॉर्म, ओके, एंड keep this admission form in a separate file. After some time, or then this information is shared with different departments of our school, like library department, like sports department, like computer department, like transport department. सब में हमने वो information share कर दी. And after some time, if any student wants to change their address or any or mobile number, whatever information they want to change, वो change कराता है, ठीक है. change कहाँ कराएगा, suppose that he goes to the office and change their information. अब information कहाँ change हुई, ऑफिस में change हुई, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आई, उसका डेटा क्या हो गया था, शेयर हो गया था डिफरेंट डिपार्टमेंट से. अब उसने चेंज कहाँ कराया, ऑफिस में चेंज कराया, तो बाकी जगह डेटा जो था वो डुप्लीकेट हो गया. मतलब और डिपार्टमेंट में वो डेटा अलग है और मतलब पुराना वाला डेटा रह गया और जो ऑफिस है उसमें नया डेटा आ गया. तो मीन्स एक ही स्टूडेंट के, सपोज ने मोबाइल नंबर अपडेट कराया तो एक ही स्टूडेंट के मोबाइल नंबर ऑफिस में भी अलग है और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में या कंप्यूटर डिपार्टमेंट में या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में या लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में वहां उसका रिकॉर्ड अलग है. क्यों, क्योंकि उसने अपडेट कहाँ कराया था, सिर्फ ऑफिस में जाकर. ये होता है मैनुअल में. लेकिन जब हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, लाइक DBMS सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इफ वी अपडेट अवर रिकॉर्ड इन any one place, either the computer department or the office
or transport department, anywhere we can change. So it will reflect its data in all over the table which are connected with main. जो मेन के साथ कनेक्टेड होंगी सब के साथ वो क्या हो जाएगा, चेंज कर देगा। ये नहीं है कि एक में चेंज हुआ बाकी में चेंज नहीं होगा, सभी में जाकर वो चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, data sharing is made easy, means we can easily share our data through the database software. Next, the end users productivity improved. Next, decision making with data is improved. Then improved data access. Improved data access means we can get any data any moment of time within a second. मतलब एक्सेस हम डाटा को बहुत जल्दी कर लेंगे। आपका रिकॉर्ड आपको फैच करना है तो सिंपली यू हैव टू राइट सम कोड। कोड मींस like your student ID and then you get your information. Then better data integration. So these all are the advantages of DBMS. ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप DBMS का यूज करोगे, डेटाबेस का यूज करोगे। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ DBMS. Features means first or important feature is query ability, means through the query you can insert your record in the database. Through the query you can update your record in the database. Through the query you can delete your record from the database or fetch record you can also do with the help of query. So everything you have to do here with the query. So DBMS have query ability. Then backup and replication. So backup you know very well और replicate भी easily हो जाएगा. Then security, if we use DBMS software then security will improve. ये improve है. Computation means calculation we can do with the help of software. हम कर सकते हैं. Next is your database servers. Database servers are dedicated computers that hold the actual databases and run only the DBMS and related software. Means a server is a type of computer which hold only database. Means it can hold many database in it. एक कंप्यूटर है वो सर्वर का काम कर रहा है और उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, डेटाबेस स्टोर होंगे, लेकिन एक टाइम पर वो डेटाबेस रन कराएगा जिसको आप चाह रहे हो, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो लिखा हुआ है डेटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेसेस and run only the databases and related software. Means it can run only DBMS means database and its related softwares, nothing else. Next, typically databases available on database servers are accessed through command line or graphic user interface tools referred to as front end. Means those things are visible to you, that is known as front end. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि just like ATM machine. In ATM machine, you will get a message like withdrawal, balance inquiry, mini statement, change password like this. So this is called front end. So it may be a command line or it may be a graphical. So like ATM machine is a graphical user interface. So everything is written. ठीक है, just you touch or press the button. उसमें खाली आपको या तो टच करना पड़ता है या बटन प्रेस करने पड़ते हैं. So that is called front end. But the database server are referred to as back end. जो डेटाबेस सर्वर होते हैं वो बैक एंड होते हैं. मींस वो आपको कभी नहीं दिखेंगे. इफ यू विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट देन इट विल विड्रॉ, निकल तो जाएगा एंड डिडक्ट अमाउंट इन योर रिकॉर्ड. जो आपका रिकॉर्ड है उसमें अमाउंट डिटेक्ट कर देगा और सेव कहाँ करेगा, डेटाबेस में सेव कर देगा. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ बैक एंड. सो दीज टू आर द फ्रंट एंड बैक एंड. तो डेटाबेस हमेशा जो होता है वो होता है बैक एंड और फ्रंट एंड में क्या होता है, सिर्फ एक इंटरफेस होता है जिसके थ्रू हम काम करते हैं. नेक्स्ट, DBMS. RDBMS. R stand for relational.
DBMS. Here we use the concept of relational database, not flat file. देखो इसका नाम फ्लैट डीबीएमएस नहीं है, इसका नाम है RDBMS, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. क्लियर? बिकॉज इन रिलेशनल डेटा मॉडल वी वर्क इन मल्टीपल टेबल्स और टेबल्स आर कनेक्टेड या कंबाइंड यूजिंग अ कॉमन फील्ड. जो टेबल्स कंबाइंड होती हैं वो एक कॉमन फील्ड से कंबाइंड होती है और इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय EF कॉड. जो EF कॉड थे उन्होंने इसे लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था. कहां से? IBM के कहां पर? सन जोस रिसर्च लैबोरेटरी से. तो लिखा भी है a relational database model. A relational database management system is a database management system that is based on relational model as introduced by EF code of IBM's Sun Joes Research Laboratory. Next, in the relational model of a database, all data is presented in terms of tuples grouped into relation. Tuples means record. We will discuss afterwards. What is tuple? What is the group things? ठीक है, ये बाद में देखेंगे अभी. Now, database concept. Actual concept of database क्या होता है? अब छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे इसमें, लाइक कॉलम क्या होता है, रो क्या होती है, ठीक है, रिकॉर्ड क्या होता है, एक्सेट्रा. ठीक है. A database can have one or many tables. This we read already. ठीक है, एक डेटाबेस में एक या एक से ज्यादा टेबल हो सकती है. ठीक है, बिकॉज वी आर वर्किंग इन रिलेशनल डेटा मॉडल. RDBMS में हम काम कर रहे हैं तो उसमें मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं. देन फील्ड्स. फील्ड्स इज नथिंग बट इट इज अ कॉलम और इट अनदर वर्ड्स वी नोन एज एट्रीब्यूट्स. देखो एट्रीब्यूट आ जाए, फील्ड आ जाए या कॉलम आ जाए, ऑल थिंग्स आर सेम. फील्ड्स, attribute and columns, all things are same. Columns that define the value in the row. Columns that define the value in the row. Columns are used to define values in rows. Okay, then it contains only one type of information. Means a single column contains single or one type of information. Suppose name of the column is name. कॉलम का नेम क्या है? सपोज दैट स्टूडेंट नेम. तो इन दैट पर्टिकुलर कॉलम वी स्टोर नेम ऑफ द स्टूडेंट ओनली. अनदर कॉलम नेम लाइक स्टूडेंट आईडी. तो इन दैट वी स्टोर ओनली आईडी ऑफ द स्टूडेंट. तो मींस सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी स्टोर इन अ फील्ड, इन अ कॉलम. लाइक कंपनी, रीजन, प्रोडक्ट, मंथ, सेल्स. दीज आर द डिफरेंट फील्ड नेम. नेक्स्ट, रिकॉर्ड. Next is record. Record one row of data that contain value of each field. One row means complete row. Complete row कैसे होगी? Suppose that in our table there are 4 columns. One is student ID, second is student name, third is student address, and fourth one is student contact number, means mobile number. So these are the 4 fields, 4 columns. If we put value in all these 4 columns, then it makes a single row. It makes a single row. So means collection of fields data that makes one record. जब चारों में हम कुछ ना कुछ वैल्यू फिल कर देंगे और एक रो बन जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक रिकॉर्ड बोलेंगे. A record display all the information about a single record. ठीक है, about a single पर्सन. मतलब एक कोई पर्सन होगा, एक कोई आइटम होगा, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो होगी वो क्या कहलाएगा? रिकॉर्ड कहलाएगा. जस्ट लाइक ABC, EMEA, प्रोडक्ट 3, जैन 10,000 showing one complete record. Clear? Here table is not given. और suppose that a company, ये कॉलम था तो उसका नाम हो जाएगा ABC, रीजन EMA, like this. So all these are having some values. So these all the values combined together to make a record. जब एक सब मिल जाएंगे तो ये क्या मिलेगा? एक चीज का